Hello, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to present our distinguished guest speaker for today, Mr. Vikas Salaria. He is not just your run of the mill speaker, he is the principal AI architect at DMI Innovations Private Limited, a bona fide expert in the thrilling realm of artificial intelligence. Now, Mr. Salaria's career reads like a tech giant's roster, with stunts at Wipro, Nokia, Infikia Tech, and Birlasoft. He has navigated the tech landscape like a seasoned mariner. He has seen it all and possesses a wonderful knowledge of AI that is as familiar to him as the back of his hand. Today, he graces us with his presence to shepherd us through a transformative journey into the future of AI. Picture self driving cars, igneous healthcare solutions, and robots taking care of our domestic tragedy. Mr. Salaria will illuminate the marvels of the incredible technology and its impending impact on our lives. But it's not just about experience. His expertise is unparalleled. Armed with a solid foundation in BTech and a postgraduate degree in machine learning and AI from the prestigious University of Texas, Mr. Salaria stands as the epitome of guidance for his exhilarating exploration. So prepare yourselves to uncover the masteries of AI and explore enticing career avenues in this domain and gain insights into the mechanics of chatbots. So this is your golden opportunity to surge ahead of the curve and acquaint yourself with the future right here, right now. So fasten your seatbelts and let us embark on a captivating journey into the enchanting world of AI, guided by the incomparable Mr. Vikas Salaria. So over to you, sir. Thank you very much. So I'll give a brief agenda, what all things we'll be covering during the session. So we'll quickly go through the what exactly AI is and data science. What are the categories of data sources that we use in order to have insight of the data and uh, implement the solutions to get implement the models and get the useful insight from all the data that is available on internet or specific to the companies. Then we'll see that AI and data science, where in what all fields it is getting revolutionized, and so AI and data science is everywhere. So we'll try to cover few of the industries where a great revolution has been happening with the help of AI and data science. Then we'll see that the most interesting part is the, as you all are aspirants to get into the data science, what all job titles are there, how one can pace up the career path of data as a data scientist or an AI engineer, and what all job profiles are there while working in the ecosystem. It's like a similarly as in a school or college, you have different persona. uh, you have students, you have teachers, principal, administration staff. Similarly, there are different career paths or job titles that are there uh, in AI ecosystem, and every individual who is in that specific job profile have different roles and responsibilities. Then we'll see that what it takes to become a data scientist, what all things you require so that you can acquire this knowledge and can get into the job. Then we'll see, okay, where this AI is going uh, further, like AGI is coming, and what are the future innovations, where we are heading up, how we are transforming the uh, individual lives and the society with the help of AI and the advancements and the technology. Then we'll see the chatbot demo. Like, you will see that will within few minutes that specific chatbot will learn the immense amount of data, and you can ask any question and it will give you correct answers. Then we'll proceed further with the with the Q&A part, where I will take question and answers, and I'll try to give suitable answers for it. Sure. So I hope you guys are excited. Let's start with the journey. I'll give you a break, a little bit walkthrough about what exactly my profile is and what I do in the industry. So I have around 15 years of experience in IT industry,
and currently working as a principal AI architect in DMI Innovation Private Limited. It's a US based company, and we work for federal government agencies, and I'm closely associated working with generative AI use cases. I hope you must have heard about ChatGPT, and it's pretty popular amongst everyone, and a lot of people are using it to get the suitable answers. So we actually work on how to make that ChatGPT more wiser. We work on certain algorithms that help you in gaining the insight of the uh, the the uh, the uh, the immense knowledge that we have, the data that we have in this world, and these models are trained on those specific knowledge. And when you ask a question, you'll get a very accurate answer. So we kind of work on those chat gpt algorithms to customize the solution and get the industry level use cases to be the use cases that we are working on to get the to create a great solution for it. And education, if I talk about, I have done my BTech and PG in machine learning and AI from University of Texas. I was fortunate enough to work with companies like Wipro, Nokia, Inficare, Bolt Technologies, FIS Global, Birlasoft, and currently working in DMI Innovation. So in this 15 years, if I go through the journey, I have worked as a network engineer, as a software engineer, then moved into a QA automation part where automating the complex projects in terms of QA. And then since data fascinates me, so I have did I did my PG in machine learning AI, then uh, managed the team, worked as an architect. So in IT, if you are curious to know a lot of to know and excited to work in different fields, it's just your zeal and how you can leverage that specific technology that is available around you, and you can work on those stuff. So that is pretty much exciting about the IT, where you can keep on learning new things and on the working on different stuff, and contributing to the IT industry or society. Then, if I talk about the domain part, I have worked in telecom, banking, e-commerce, healthcare, and federal domain. So all the different kind of use cases that related to the industries. And so let's move further to know what exactly AI and data science is. तो हम बात करेंगे AI and data science की. So what exactly comes to your mind when you think about what is data science and what is artificial intelligence? तो as we can see, हम यहाँ देख सकते हैं कि data science means data and science. These are two things that is coming up in our mind: data and science. So data means all the, since 2000 we are using mobile phone, we internet is pretty common, and social networking sites, and lot of companies, all the data is in internet or cloud infrastructure. तो हम देख सकते हैं कि the usage of internet, data, and mobile phone and all these things have increased a lot, and this data is easily available. So now companies decided, okay, how to leverage this data, कैसे हम इस data को use कर सकते हैं to create, to implement the solution and find the useful insight. So to finding the useful insight of from the data that is available, getting into a conclusion, or extracting the knowledge from it, is all about data science. और उसको use करने के लिए we use a lot of algorithms that is based on the science, maths. That's why we say that as a data science. And artificial intelligence, अगर हम बात करते हैं, so artificial intelligence क्या होती है? Artificial intelligence, you can say it's related to the human intelligence. Right now, what we are doing, we are trying to have a collaborative approach where we can achieve what humans can do, and in future we'll surpass that specific intelligence. That's why we call it as an artificial intelligence, where हम लोगों को एक situation देते हैं, so we learn from that situation. Okay, suppose
you are studying a new topic. तो आप क्या करते हो, आप उसको you go through that topic, you understand, okay, इसमें क्या लिखा हुआ है, you grasp that knowledge, and in future when any question that comes from that topic or the context that you have learned, you are able to answer it. Similarly, machines भी ऐसे ही करती हैं. आप आप machines को data feed करते हो and वो उसको train करती है, and जब वो ट्रेंड हो जाती है उस पे, उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो तो मशीन उसको आंसर करती है. तो वी आर ट्राइंग टू मिमिक हाउ ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेव वर्क्स, and in future will surpass this human intelligence also, where the things that we are not able to do it, AI will able to easily figure it out and work on that stuff and get the things done. Okay. So it's like artificial intelligence is automating the process, solving the complex problem, and making intelligent decision as does human takes. We'll proceed further. Like we talk about data. Data is food to any algorithm or AI or data science. So we have broadly differentiated or categorized data into three types. One is the structured data, other is the unstructured data, and the semi-structured data. So if you talk about structured data, I hope सबने एक्सेल शीट में काम किया होगा जिसमें देयर आर सर्टेन कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो अगर मैं बात करूं कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स की, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल डेटा सेट लेते हैं जिसमें there are certain attributes related to patients, that patient is diabetic or not. So for that, the attributes that we can think of is one is the blood sugar, then blood pressure count, then other blood related attributes, geographical condition, age, gender. All these attributes are there that are relevant in terms of predicting that person is diabetic or not. So when you go to the doctor, you tell doctor that okay, I am so and so, and I have this symptoms. So doctor advise you to actually go get the test done, and then on the basis of knowledge that doctor has, uh, the uh, the doctor will give, okay, you are diabetic or not in case of that diabetes situation. So similarly we have this structured data where we are aware of the attributes. हमें पता है कि क्या क्या कॉलम्स हैं उस डेटा सेट में, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? सपोज देयर इज अ पीडीएफ, फॉर एग्जांपल इन पीडीएफ टेक्स्ट है, कॉलम्स टेक्स्ट है, इमेजेस है, देयर आर टैब, table content is there, you can have any information there. It's in unstructured way where you can extract useful insight from the PDF documents. You're not aware what exactly it is there inside the document. And images की बात करूं, so image, it can be cat, dog, all different kind of categories or anything. So we call it as an unstructured data where we are not aware what exactly data is, and we need to find out that what is the context inside the PDF document. Then we have semi-structured data. So semi-structure we call it as a hierarchy. Like for example, एक tree structure है, grandparents हैं, फिर parents हैं, then children. So एक आप hierarchy देख रहे हो, यहाँ पे एक tree structure देख रहे हो, तो उस tree structure को हम semi-structure बोलते हैं. We call it in computer science like कुछ लोग जानते होंगे JSON. JSON is a key value pair. So key value pair, we have a key and then we have a value that is wrapped in the dictionary format. So we call it as a semi structure where we know that okay, क्या क्या हमारे पास attributes हैं और एक format में है. So उसको हम semi structured data बोलते हैं. And all these data has been passed to the AI algorithm or finding the useful insights. So उनकी different strategy होती है करने की. Right, now we'll go through that. Okay, how to how AI is revolutionizing different fields. So for example, हम healthcare का एक example लेते हैं.
तो हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट सब हेल्थ केयर में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग. सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डायबिटीज डेटा सेट वाला. तो एज ए पेशेंट आप जा रहे हो डॉक्टर के पास एंड यू हैव यू नो आपने कंडीशंस बताई अपनी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो. सो डॉक्टर हैज एडवाइज्ड यू टू गेट द blood test done, and on the basis of the knowledge that doctor has, or the degree that he or she has taken, वो आपको बताते हैं okay, you are diabetic and you have to take certain precautions and you have to take these medicines, you have to follow the prescriptions. Now how AI can help in this? Since we have the data, AI को हमने एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जो ट्रेंड कर सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ ऑल द पेशेंट्स, जिनका ब्लड शुगर काउंट क्या है, वो डायबिटिक थे कि नहीं. एंड व्हाट एआई कैन डज, एआई कैन एक्चुअली गिव यू अ प्रोबेबिलिटी स्कोर कि दिस पर्सन इज 70% having chance of getting diabetic in future. So you can take preventive measures to avoid this situation. So you can see how AI is helping in transforming individual life, where it is actually predicting the future कि ये बंदा को ये problem हो सकती है. By creating the algorithm, by analyzing the data, then we say that okay, we have personalized treatment recommendations. So we'll see that chatbot where we will pass in the information, the entire medical science book of around 800 pages, and it will learn that, and uh, then you can ask any question. So for example, medical field में you have as a patient, as a user, you have subscribed to an application, जो मेडिकल एप्लीकेशन है, और आप एक फर्स्ट, जैसे सब लोग क्या करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी अगर सर्च करना होता है, वी गो टू गूगल एंड गूगल गिव यू द आंसर. हाउ गूगल गिव यू द आंसर? बाय all these algorithms are trained on immense amount of data that gives you correct answer. So now you can see how AI is actually revolutionizing in healthcare industry. I'll give you a real-time example of when I was working with Johnson Johnson. That is a medical use case where we were working. So in medical industry, uh, we call it a thread-like object. Like whenever somebody has wound, or in the operation theater, you have to the doctor has to operate. So that wound need to be stitched by a thread. That thread-like object is called suture in medical terms. उसको suture कहते हैं. And that suture can be of different types. It can be of different types, and उसमें हमें वो contaminated नहीं होना चाहिए. So we created with the help of computer vision. So computer vision is one of the field in AI. So we created a solution that actually scans the images and find out that जो suture है वो contaminated है कि नहीं, और what kind of suture it is or thread it is. So in that way we actually automated the process. What the things that were manually done by research scientists is been done by the machine, and that those research scientists can work on something else that can contribute in healthcare advancements. So now आप देख सकते हैं कैसे AI इन सब चीजों को ऑटोमेट कर रही है. Then you can scan all the images of the body, and you can create certain algorithms that can find out okay, you will be infected or not with some disease or not, or algorithms are smart enough to actually give a high accuracy kind of thing. So all these things are actually happening in healthcare. When we talk about finance, so in finance we all know that we get few people get call from the banks that you can take loan or not. तो वो calls random नहीं होती. There are certain algorithms that are based in finance जो कि बताते हैं okay, this person can do fraud or not. Fraud analytics जो हम बोलते हैं कि what is the percentage of doing fraud of an individual. तो
वो जो बैंक होता है उसने आपका पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और डेटा उसके पास होता है, and a certain algorithms has run behind the scene that actually predict, okay, 20% chance of this person is doing the fraud, or 80% chance of this person is doing the fraud. So people who get the calls are lower in that fraud detection measure. That's why they get called more often, and the people who may can do the fraud will not get the call. So in that way, banks are making sure that their money is not being uh, not utilized in the right way, or money is not lost. They should not have loss while giving loan to a person who can do the default. Then we have algorithm trading is there, personalized finance recommendations are there. So a lot of things are happening in finance. Then in transportation, if we talk about transportation, so we all can see that logistic comes in transportation, AI powered autonomous vehicles comes. Like we have autonomous driving system, ADAS is there. That is a lot of companies are giving vehicle, uh, automobile, where it can detect what all objects it is coming in front, and can respond accordingly by indicating that, okay, this is accident prone area, or this certain object has come in front, and can apply a emergency brake. And so with the help of computer vision algorithms, all these traffic management is being done, and there's number plate tracking is there. A route optimization, we all use GPS, so it suggests you a different route, what best suitable route is there. So all you can see the advancement that is coming up, the self-driving cars. Now in future, it's not very far that you don't have to drive the car. Machines will drive for you, and you just have to lie down, and you'll have the self-driving cars that are going on, and with a higher accuracy, and traffic management and everything will be done by the technology. So all these things are coming up in transport sector. Then we have retail. So retail is pretty interesting sector, where you all have been seen the, as a part where, we all do shopping. Somebody use some Mintra or Amazon. Then OTT is pretty famous, so Netflix movies and uh, Amazon Prime. So we can say that if somebody has noticed while using Mintra, that when you are buying a specific product, you can see that, okay, the percentage that is coming up, like it is 65% has a like interest associated with the thing that you are buying, or 30% or 20%, and you can figure it out, okay, yeah, 70% it is saying, and actually I like this specific product, and in past also I have bought this kind of t-shirt, I like this color, or the way that my interest, it matches my interest. How it is actually finding out that percentage? So how it is not random that, okay, giving any number. So it what it is doing, it is internally, all on the basis of the shopping history, we all are segregated into certain clusters. For example, suppose I'm in mid 30s, and I have certain influence to buy certain products, और मेरे को अच्छा लगता है, ओके, ठीक है, टी शर्ट इस ब्रांड की मेरे को अच्छी लगती है, एंड मेरे को इस स्पेसिफिक कलर का की टी शर्ट मुझे अच्छी लगती है, तो मैं उस क्लस्टर में होऊंगा, और मैं कौन से ब्रांड के साथ इन्फ्लुएंस हूँ, और मैं कितने रेंज के प्रोडक्ट लेता हूँ, तो मैं एक स्पेसिफिक क्लस्टर में होऊंगा, जिसमें देयर आर अदर पीपल आल्सो हु आर इन दैट क्लस्टर हु हैज सिमिलर काइंड ऑफ interest. So these clustering algorithms, like uh, unsupervised learning, that we say, that create certain clusters on the unstructured data, create certain clusters, and that cluster, a person who is associated जो उस cluster में है with the other person has similar kind of
इंटरेस्ट, तो वो क्लस्टर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से, एंड आप नीचे देख सकते हो सजेशन, ओके ऑल्सो बाय दिस स्पेसिफिक थिंग। तो वो जो सजेशंस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप उस क्लस्टर में हो और बाकी लोगों ने उस टाइप के प्रोडक्ट खरीदे हैं इन फ्यूचर, so you have a higher possibility to buy it. So in that way companies are actually increasing their revenue. Even you will be amazed कि हर एक बटन पे भी एआई लगी हुई है, जिसमें अगर मेरे को व्हाट काइंड ऑफ, सपोज मैं Amazon यूज कर रहा हूँ और या फिर मिंत्रा या फिर कुछ भी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को होम पेज कुछ और दिख रहा है और XYZ बंदे को कुछ और दिख रहा है होम पेज। तो उसको अलग होम पेज क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ द कस्टमाइजेशन दैट दे हैव डन, कि मेरे को अगर ऐड टू कार्ट लेफ्ट साइड में पसंद नहीं है, राइट साइड में पसंद है, और मेरे को ये व्यू अच्छा लगता है, तो मेरे को वो दिखेगा और दूसरे वाले बंदे को कुछ और दिखेगा जो उसको अच्छा लगता है। सो पर्सनलाइज्ड, सो companies are creating a personalized experience for you so that you can be retained on that specific screen, and it can be a valuable customer to buy something. Even on a single button like add to cart, that button has different colors as per your choice. If you don't like blue color, you will not get it, you'll get yellow color if you are inclined towards that specific color. So now you can imagine how AI is actually helping out the companies as well as personalizing your experience. The way it is trained, the analyzed, everything is tracked, like response time, how much time you waited on that specific screen, कितना टाइम आपने स्क्रीन में यूज किया, आप दूसरे स्क्रीन में कब नेविगेट होते हो, ये सारी चीजें ट्रैक होती हैं। एंड एल्गोरिथम्स एक्चुअली पर्सनलाइज्ड आपका वो कस्टमाइजेशन बनाते हैं। देन वी कॉल, सो यू कैन इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट द एआई इज वर्किंग ऑन। फिर उसके बाद हम स्पोर्ट्स में जाएंगे। स्पोर्ट्स में वी नो दैट स्पोर्ट्स एनालिटिक्स प्रीटी कॉमन, और प्लेयर्स की एंडोरेंस टेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाइट प्लान, और ये सब चीजें बनती हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस of players. Then we physiotherapist in physiotherapy, AI ने काफी revolution करी है, where a patient come up with a certain injury, तो algorithms ये बता सकते हैं इसको level 1 injury है कि level 2 है, level 3, the different kind of levels of injuries that happens in the sports. Physiotherapist तो बताता ही है, along with that there are certain algorithms जो कि actually ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को कि किस लेवल की इंजरी है। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस, एक दो सिटिंग के बाद फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता है, और वो एक्सरसाइजेस के लिए आपको जाना पड़ता है क्लिनिक में, ताकि अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट यू कैन डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, और उसके बाद आप घर पे भी कर सकते हैं। तो हाउ एआई इज एक्चुअली रेवोल्यूशनाइज दिस थिंग by creating certain applications. There are certain applications जो कि actually में आपके body movement को track करती हैं and find out whether you are doing that specific exercise in correct way or incorrect way, and indicate you if you are doing it in incorrect way to rectify yourself. So in that way आप देख सकते हो personalized experience मिला आपको एज ए पेशेंट। जो कुछ पेशेंट्स नहीं जा सकते क्लिनिक के पास, दे आर सफरिंग from injuries, old age injuries, and they are suggested to do certain exercises. So you at home you can do certain exercises with the help of AI driven applications that can correctly track your bodies, can track your body movements, and tell you that whether you are doing this exercise correctly or not. So now you can see how it is actually AI is helping you out in making your life better. Then in education, we know that adaptive learning is there, personalized tutoring and education analytics. So custom learning is being followed in education industry, and a lot of things are happening in that sector also. Okay, now we'll proceed further for data, career paths and job titles. So as I mentioned earlier that
in AI ecosystem, like in school or colleges, we have teachers, students, principal, administration staff. They all have different work, right? They all have different work. So तो हम तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हर एक एआई इकोसिस्टम में क्या क्या जॉब टाइटल्स हो सकते हैं. वी कैन हैव डेटा एनालिस्ट. तो अगर हम डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं, सिंस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, वो डेटा नॉर्मलाइज भी हो सकता है. अगर मैं बोलूँ नॉर्मलाइज्ड, इट मींस दैट अ बेल कर्व. आपने देखा होगा प्लेट्यू. प्लेट्यू कैसे जाता है? ये नीचे से जाके एक आता है, फॉर्म आता है, एंड देन डिप्स डाउन. सो इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डेटा, 66% ऑफ डेटा इज इन, कि एक मेजॉरिटी ऑफ डेटा एक ही उस पे है. मतलब यू हैव दैट, ओके, मेजॉरिटी ऑफ 70% डेटा आपका एवरेज है और स्टीप कम है. लेकिन कुछ डेटा ऐसा हो सकते हैं जो आउटलायर्स हैं. फॉर एग्जांपल, दोज आर इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड. उसका मतलब कि फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, तो रियल एस्टेट में नॉर्मल जो घर हैं, फॉर एग्जांपल 30 to 50 lakhs की रेंज में, एक दो घर हैं, तीन घर हैं, और कुछ घर जो हैं वो एक्सट्रीम है, काफी एक्सपेंसिव घर है. तो वो कुछ डेटा पॉइंट्स उस तरफ हैं. तो इसका मतलब वो डेटा जो है वो इंक्लाइन टुवर्ड्स राइट है. इट हैज आउटलायर्स. तो वो फाइंड आउट करना है कि वो आउटलायर्स क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे जब मॉडल ट्रेन होगा और प्रिडिक्शन पे. तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? देन देयर कैन बी डुप्लीकेसी इन डेटा. बहुत सारे डेटा डुप्लीकेट है. फिर डेटा एनालिस्ट फाइंड करते हैं मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी लगा के, स्टैटिस्टिक्स लगा के. सो देन with the help of Python, certain libraries are there like matplotlib and bar plots, historical plots. तो ये visualization part. सो एनालिस्ट क्या करता है? डेटा को नॉर्मलाइज करता है, आउटलायर्स होते हैं उसको रिमूव करता है, उसके अंदर यूजफुल इंसाइट्स लेता है, लाइक डैशबोर्ड क्रिएट करता है, लाइक पावर बीआई. कुछ कंपनीज को डैशबोर्ड चाहिए होता है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड. ओके, हमारा कितना परसेंटेज ऑफ सेल हो रही है, हमारा किस प्रोडक्ट में कितना सेल हो रहा है. तो डेटा को एनालाइज करके, वो डेटा कैटेगोरिकल भी हो सकता है और वो डेटा न्यूमेरिकल भी हो सकता है. तो वो डेटा को एनालाइज करके डेटा एनालिस्ट सर्टेन यूजफुल इंसाइट्स बनाता है और डेटा क्रिएट करता है, जो कि आगे बैलेंस डेटा क्रिएट करता है. हमें बैलेंस डेटा क्रिएट करना होता है, क्योंकि आउटलायर्स होगा, इसका मतलब आप किसी स्पेसिफिक डेटा से इन्फ्लुएंस्ड हो. तो जब डेटा जब मॉडल प्रिडिक्ट करेगा, तो वो इन्फ्लुएंस पहले ही हो गया किसी स्पेसिफिक चीज से, जो कि आउटलायर था, जो कि एक्सट्रीम था. तो उसको हटाना पड़ता है, वो आउटलायर्स को. तो न्यूट्रल रैक के मॉडल लार्जर ऑडियंस को कवर करता है. सो हमेशा हम लोग जब ये प्रोबेबिलिटी और इसकी बात करते हैं, तो एक पॉपुलेशन होती है जिसमें पूरा डेटा होता है, उसमें से हम सैंपल करते हैं. सैंपलिंग थ्योरम बोलते हैं. सैंपल करते हैं उसे, वो सैंपल निकालते हैं, एंड देन वी एक्चुअली ट्रेन आवर डेटा एंड फाइंड द इनसाइट्स फ्रॉम देयर डेटा. लाइक जैसे वोटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें आप जो पहले रिजल्ट के पहले आपको प्रिडिक्शन आ जाती है कि XYZ पार्टी इज विनिंग. तो वो पूरी एक पॉपुलेशन को नहीं करते, वो कुछ उसमें से सैंपल निकालते हैं, रैंडम सैंपल, और उसमें एनालाइज करके बताते हैं. तो सिमिलरली लाइक डेटा एनालिस्ट एनालाइज दी डेटा. फिर डेटा साइंटिस्ट रोल क्या होता है? डेटा साइंटिस्ट, फॉर एग्जांपल, डेटा इज बीन एनालाइज्ड, रिफॉर्म, अब उसको ट्रेनिंग करवानी है. तो डेटा साइंटिस्ट, व्हाट डेटा साइंटिस्ट डज ऑन द बेसिस ऑफ द यूज केस जिस पे वर्क कर रहा है. फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन. लाइक लीनियर रिग्रेशन में हमने सुना होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन है, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट एंड x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो वी ट्राई टू फाइंड द स्ट्रेट फिट लाइन इन दैट. तो वो लीनियर रिग्रेशन कि हम कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, लाइक रियल एस्टेट में हाउस, ये हाउस
ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर्स लाइक ये 2 BHK किस जगह पे है, क्या इसका विसिनिटी गया है और क्या मार्केट रेट चल रहा है, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये हाउस कोई भी कितना अमाउंट का हो सकता है। तो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कुछ, तो हम इसमें लीनियर रिग्रेशन फॉर एग्जांपल लगा रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, इन सब एल्गोरिथम्स में वर्क करता है। डेटा मिल गया उसको, उसके बाद वो ट्रेन करता है डेटा को, जो एग्जिस्टिंग डेटा है, एंड फ्यूचर में कुछ अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो प्रिडिक्ट करता है मॉडल, ओके इसको क्या इसका क्या कॉस्ट होगा रियल घर का, या फिर कैटेगरीज जैसे वो मैंने बताया आपको डायबिटिक है कि नहीं, तो वो प्रिडिक्ट करता है कि व्हाट इज द परसेंटेज दैट स्पेसिफिक पर्सन इज डायबिटिक और नॉट, और फ्रॉड करेगा कि नहीं करेगा। तो डेटा साइंटिस्ट का काम एक्चुअली एल्गोरिथम लेवल पे होता है, वेयर वो एल्गोरिथम्स बनाता है, POCs बनाता है, एंड वो एल्गोरिथम्स के वेट सेव करता है। देन वी से दैट ओके डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डेटा इज इन रियल टाइम, डेटा इज इंक्रीजिंग, डेटा रियल टाइम इंक्रीज हो रहा है कि आपने कुछ मॉडल कुछ डेटा एनालाइज करा, फिर नया डेटा आ गया, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, तो आपको एक रोबस्ट पाइपलाइन बनानी पड़ती है, ऑर्केस्ट्रेटेड पाइपलाइन, कि वो डेटा लाइव डेटा फेड हो रहा है एल्गोरिथम को, और उसकी वर्जन कंट्रोल हो रहा है, वर्जनिंग उसकी हो रही है, एंड आफ्टर वर्जन कंट्रोल वो जो डेटा है वो एक मतलब डेटा इंजीनियर उस ऑर्केस्ट्रेटेड पाइपलाइन पे वर्क करता है, कि उसका काम होता है कि जितना भी डेटा है उसको कैसे उसकी वर्जनिंग करे, टैगिंग करे, उसको कैसे प्रोसेस करे, उसको कैसे अवेलेबल करे डेटा साइंटिस्ट को या फिर टीम को, सो दैट दे कैन लेवरेज दैट डेटा, और कहाँ पे स्टोर करे। लाइक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे स्टोर होता है, एंड तो ये डेटा इंजीनियर का वर्क होता है कि डेटा को डिजाइन और मेंटेन करना। देन वी हैव मशीन लर्निंग इंजीनियर, दीज आर एक्सपीरियंस गाइस जो कि एक्चुअली में दे हैव वेरी गुड नॉलेज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइक आपने एक मॉडल बना दिया, आपने एनालाइज कर दिया, अब इस मॉडल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है। बाकी फ्रंट एंड, एक एप्लीकेशन में मेजर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्रंट एंड हो गया और एक बैक एंड हो गया। तो बैक एंड में जहाँ पे APIs लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और फ्रंट एंड हो गया जहाँ पे UI का आप देखते हो, UI एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो वो फ्रंट एंड हो गया। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम क्या होता है कि मॉडल तो बन गया, अब इस मॉडल को मेरे को APIs बनानी, फॉर एग्जाम्पल फास्ट API, फ्लास्क API, डिफरेंट APIs फ्रेमवर्क होते हैं, एंड इस मशीन लर्निंग इंजीनियर को स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, कैसे APIs लिखी जाती हैं, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, OOPS की कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होती है, अलॉन्ग विद मशीन लर्निंग की नॉलेज होती है, उस स्पेसिफिक मॉडल को कैसे यूज कर सकते हैं, एंड एक रोबस्ट बैकएंड फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है, एंड डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। कई जगह पे डिप्लॉयमेंट भी मशीन लर्निंग इंजीनियर करता है, कई जगह पे जैसे अभी मैं बोलूंगा ML ऑप्स इंजीनियर, उसका काम होता है क्लाउड पे डिप्लॉय करना। अब आपके लोकल मशीन में आपने डेटा साइंटिस्ट ने बना दिया, डेटा इंजीनियर मशीन लर्निंग वाले ने भी कर लिया काम, आप उस लोकल मशीन को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, लॉट ऑफ यूजर्स कांट एक्सेस इट, लाइक वो इंटीग्रेट करना है आपको UI के साथ, और एक सर्वर चाहिए होता है जहाँ पे डिप्लॉय करना होता है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड की अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, GCP, गूगल क्लाउड, तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग द कंटेनर्स क्लाउड, सो ML ऑप्स इंजीनियर को क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, उसको मशीन लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि उस मॉडल्स में कुछ एरर आ रही है तो उसको फिक्स कर सके। डिप्लॉयमेंट की स्पेशली नॉलेज होनी चाहिए, क्लाउड की स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए, वेयर उसे मालूम है कि व्हाट ऑल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड, हाउ टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, और कंटेनराइज कैसे करना है, कैसे इसको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे। देन हम बात करेंगे जनरेटिव AI इंजीनियर की। सो जनरेटिव AI इंजीनियर अगर मैं बात करूं, अभी आपने जैसे मैंने बताया चैट GPT और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, तो अगर आप AI को की न्यूज़ पढ़ेंगे तो काफ़ी नए मॉडल्स निकल रहे हैं जो कि
रिलेटेड टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं और जनरेटिव एआई के बारे में हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे चैटबॉट्स जो बन रहे हैं, जो अभी हम डेमो देखेंगे, कि जो भी डेटा होता है उसको आप एनालाइज करते हो, तो बेसिक इनका जो होता है कि एनएलपी, एक तो एनएलपी यूज होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड ट्रांसफॉर्मर्स यूज होता है। अब ट्रांसफॉर्मर्स में आपने सुना होगा एनकोडर्स, डिकोडर्स। तो वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है जिसमें मॉडल को डेटा दिया जाता है, उसके अंदर कुछ हिडन लेयर्स होती हैं, फीड फॉरवर्ड लेयर नेटवर्क होता है, वो प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। मैंने कुछ भी अगर वर्ड लिखा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा। जैसे आपने जीमेल में भी देखा होगा, टाइपिंग दी सर्च बार, या फिर आप जीमेल में कुछ लिखते हो तो आगे प्रिडिक्ट करता है वो कि नेक्स्ट कंप्लीट कर देगा वो। तो ये सारी जो मॉडल्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, ये दे आर गुड इन प्रिडिक्टिंग सेंटेंस, व्हाट विल कम नेक्स्ट। एंड इसी चीजों पे जनरेटिव एआई में काफी रेवोल्यूशन हो रही है, वेयर काफी ओपन एआई के एल्गोरिथम्स हैं, जीपीटी 3, 3.5, 4, अभी जीपीटी 4 प्रो भी आया है, जो कि इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं। एंड हम वही डेमो देखेंगे कि वो जीपीटी 4 प्रो यूज करके कि हमें वो कितना अच्छा आंसर देता है। तो ये जनरेटिव एआई के, दिस इज प्रीटी न्यू फील्ड, और इसमें बहुत रेवोल्यूशन हो रही है। और एजीआई भी जो आएगी, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें ह्यूमन को सरपास किया जाएगा, वो जनरेटिव एआई में ही आएगी, की बेसिस पे आएगी। तो एंड दिस इज प्रीटी हॉट इन द मार्केट राइट नाउ, एंड काफी यूज केसेस इसमें आ रहे हैं। तो इट्स प्रीटी गुड करियर टू गेट इनटू जनरेटिव एआई काइंड ऑफ थिंग। देन वी हैव अप्लाइड रिसर्च साइंटिस्ट। अगर हम अप्लाइड रिसर्च साइंटिस्ट की बात करें, तो these folks are more inclined towards education field, where they are PhDs, and at least masters and PhDs, and they kind of work on new things. अभी तक आपने डेटा साइंटिस्ट देखा है, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग, ये जो ऑलरेडी बन चुकी हैं चीजें, उसको कैसे यूज करके अपने यूज केस में करते हैं। वेयर अप्लाइड रिसर्च साइंटिस्ट काइंड ऑफ वर्क ऑन क्या नई इंडस्ट्री में आएगा, क्या रिसर्च लेके आना है। तो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें अप्लाइड रिसर्च साइंटिस्ट काम करते हैं, जो कि न्यू इनोवेशंस पे काम करते हैं, कि इसको कैसे बेटर किया जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। And because of these people, we are getting a lot of new stuff that is coming up in the market, और बहुत revolution हो रही है in AI because of this thing, कि researchers are actually researching on new things, and तो वो काम होता है applied research scientist का। Then we have product analyst. Product analyst कोडिंग नहीं करते ना, कि टेक्निकली वो एक्चुअली दे वेयर हैट ऑफ कस्टमर, कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कस्टमर के पास पहुंच रहा है, एक एंड यूजर के पास पहुंच रहा है, तो वो कैसा पहुंच रहा है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको क्या चाहिए। अगर किसी कंपनी ने मेरे को बोला कि मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट आई शुड बी थिंकिंग फ्रॉम ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ कितना वो रियल टाइम में एसोसिएटेड है विद माय इंटरेस्ट, और व्हाट इज डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। तो वो प्रोडक्ट एनालिस्ट का काम होता है टू एक्चुअली wear a customer's hat or client hat and see the engineers are working on right direction or not, or the product is getting built as per the requirement or not. Then we have cloud AI engineer. तो अगर मैं क्लाउड एआई इंजीनियर की बात करूं, तो इसमें सिंस हमने अभी डिस्कस किया था कि क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक AWS, Azure, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, मॉडल्स आजकल एआई, लाइक Azure में एआई स्टूडियो है, तो उसमें आपको एआई एल्गोरिथम्स मिलेंगे, तो कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कॉस्ट कितना लगता है, हाउ टू create the solution by using cloud resources, what are the security policies, IAM policies, and so cloud AI engineer mostly work in the cloud ecosystem. That person should have knowledge about, strong knowledge about the Google Cloud or all the clouds that are working, that has
all the services and what all machine learning models are actually residing in that infrastructure. तो वो क्लाउड एआई इंजीनियर का काम हो जाता है. देन अब हम बात करते हैं कि कैसे हम ये कोई भी रोल है, हाउ टू गेट इनटू दोस रोल्स, कैसे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और एआई रोल्स हम कैसे मार्केट में कैसे हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि इंडस्ट्री में क्या पूछा जाता है, क्योंकि एआई इज ए वेरी वास्ट फील्ड. बहुत कुछ है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, देन कंप्यूटर विजन, एनएलपी. You can't work on all the things at one time, but it's good to have knowledge of everything little bit, and you have an expertise knowledge in one of the field where you are working and you have strong interest. तो उसके लिए पहले you have to prepare yourself for the initial phases. You have to prepare yourself where you have knowledge of each and everything in a decent way where you can get into the company और आप उसमें जाके जो भी आपको रोल मिलता है आप काम कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या आपको जरूरी है? मैथमेटिक्स, जैसे मैंने बोला ये ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कितने जैसे बताया मीन मीडियन मोड, सेंटर टेंडेंसी थ्योरम, कैसे डेटा को मसाजिंग करनी है, कैसे उसको कैसे उसको एनालाइज करना है, इनसाइट्स निकालना है. Then machine learning algorithms like linear regression, logistic, XGBoost, decision tree, supervised, unsupervised, what are the feature selection techniques, and computer vision में OpenCV use करना, और NLP में different technologies vectors, embeddings and large language models. तो ये सारी चीजें आपकी जो कवर होती हैं, जो जैसे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है, आपको नॉलेज होनी चाहिए. देन प्रोग्रामिंग नॉलेज, अभी पाइथन के साथ काफी machine learning libraries are being associated with it, and Python is widely used in terms of data science. But there are other programming languages also, like Rust is coming up, that is lightweight. तो Rust is picking up the pace. So हमें क्या होना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए इंडस्ट्री में, अगर आप एआई में वर्क कर रहे हो, डेटा साइंस और कोई भी टेक स्टैक में, कि नेक्स्ट 2 साल के बाद क्या आएगा. आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड राइट नाउ, व्हाट विल कम आफ्टर 2 years. तो उसी बेसिस पे वी शुड बी फ्यूचरिस्टिक. If you are working in a futuristic kind of field, you should be futuristic enough to find out what will come in couple of years, और उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. In that way, you should prepare for the job roles, or for you should prepare accordingly. तो प्रोग्रामिंग में जैसे मैंने बोला पाइथन वाइडली यूज होती है, जावा भी यूज होती है, बट जावा बहुत कम यूज होती है एआई में, बट पाइथन मेजरली. और रस्ट भी एक नई लैंग्वेज है, दैट इज अ लाइटर वे लैंग्वेज एज कम्पेयर टू पाइथन, काफी पॉपुलर हो रही है. देन वी हैव मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जैसे मैंने बात करा सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स, और एआई मॉडल्स आप उसमें बना सकते हो. तो ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको नॉलेज होनी चाहिए. देन एआई स्पेशलाइजेशंस लाइक कंप्यूटर विजन इमेजेस को स्कैन करके उसमें पिक्सल्स क्या निकलते हैं, फिर ओपनसीवी से कैसे उस इमेज को आप बाउंडिंग बॉक्सेस बना सकते हो. जैसे आपने देखा हो कहीं उसमें आता है, जैसे वो कार चल रही है तो उसके बॉक्सेस बन जाते हैं, वो डब्बे से बन जाते हैं कि ये कार है, ये बाइक है. तो वो सब चीजें, ये जो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स है उसके थ्रू होता है, बाउंडिंग बॉक्सेस और ये सब. और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे आपने टेक्स्ट दिया कुछ, फिर आप प्रेडिक्ट किया वो नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, वो एनएलपी में आ जाता है. जनरेटिव एआई इज कमिंग अप, मल्टी मॉडल, जिसमें आप टेक्स्ट दोगे आपको इमेज मिलेगी, वो इमेज बना के दे देगा. इमेज दोगे तो आपको वो डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट की दे देगा. फिर आपने वॉइस कुछ क्लिप दिया तो वो उसकी टेक्स्ट बना देगा. आपने इंग्लिश लैंग्वेज भेजी तो वो आपको डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा. तो ये सारी चीजें एनएलपी और उससे हो रही है, जिसमें वो ट्रांसलेशन काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग, जिसमें ट्रांसफॉर्मर इज द बेस
and encoders and decoders are being used to actually to get the things done. Deep learning भी आती है बीच में, so एक काफी बड़ी फील्ड है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए, एंड वो आपको डिसाइड करना आपको किस फील्ड, किस स्पेसिफिक, आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है या फिर डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उस हिसाब से यू कैन प्लान. देन वी हैव then we have just a second. Then we have MLOps. जैसे मैंने बताया, MLOps is a practice of managing machine learning models in production, including deployment, monitoring and maintenance. तो इसमें आपको क्लाउड की नॉलेज होनी चाहिए, and what all MLOps platforms are there, like Modzy is there, how to create the model can be converted into images and can be deployed on the cloud infrastructure. Then we have cloud computing, AWS, Azure, GCP, ये अभी काफी चल रहे हैं. डेटा इंजीनियरिंग का बताया मैंने कि वो ऑर्केस्ट्रेट पाइपलाइन बनाना, एंड SQL इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो. SQL की नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिस्ट, और SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कैसे आप उस डेटा को with the help of queries आप you can get the insights. तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो उसमें सेल्फ ज्वाइन लगा के और ज्वाइंस लगा के विंडो फंक्शंस, तो वो SQL की नॉलेज भी होनी चाहिए. तो SQL भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट इनटू दी AI फील्ड. ठीक है, तो नाउ विल प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स AGI एंड फ्यूचर इनोवेशंस. सो जैसे हमने डिस्कस करा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. अभी रिसेंटली इसके बारे में आया भी था कि सैम एल्टमैन करके ओपन AI का CEO है, तो ही इज मोर इनटू मॉडल्स जो ओपन AI के मॉडल्स हैं, लाइक GPT-4, टर्बो, एंड सो AGI में वो बोल रहे थे कि ओपन AI ने AGI का सोल्यूशन निकाल लिया, एंड इट इज वेरी डेंजरस ऑल्सो. तो अभी उन सब चीजों पे डिबेट चल रहा है कि ये जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं ये एक उस फॉर्म में होनी चाहिए कि इट शुड नॉट डिस्ट्रक्ट द ह्यूमन काइंड. तो उसके लिए एथिकल AI, रेस्पॉन्सिबल AI, ये सारी टर्म्स आ रही हैं, एंड द AI कम्युनिटी इज वर्किंग ऑन दोज थिंग्स वेयर टू हैव अ चेक ऑन द एडवांसमेंट्स. बिकॉज अगर कोई चीज बहुत एक्सपैंड हो रही है इन अ वेरी फास्ट पेस, देयर शुड बी certain bodies to actually monitor कि जो चीजें हो रही हैं वो सही डायरेक्शन में हो रही हैं कि नहीं, क्या एथिकली सारी चीजें यूज करी हैं कि नहीं. तो उसी को हम एथिकल AI और रिस्पॉन्सिबल AI बोलते हैं. देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वेयर जो रोबोट्स और वो सारी चीजें जो उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होगी कि वो ह्यूमन को सरपास कर देंगे, एंड दे कैन डू ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ. वो कुछ भी सीख सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, वो इंटरनली सीखेंगे. वी हैव रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक गेम खेल रहे हो, अब उस गेम में देर आर 10 नंबर ऑफ वेज टू डू ए स्पेसिफिक टास्क. आपने एक पाथ चुना, उस पाथ में आप गए, तो आपको आप उस पाथ में जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो आपको पेनल्टी मिली, और एक पाथ आपने चुना जिसमें आप सक्सेसफुल हो गए तो आपको रिवॉर्ड मिला. तो आपने लर्न करा ओके ये पाथ सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ. सिमिलरली मशीन भी ये करती है कि उसने एक पाथ चुना, उस पाथ में उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला या फिर उसे पेनल्टी दी, और अगर एक पाथ में से रिजल्ट अच्छा मिला उसे रिवॉर्ड दिया. तो बाय दिस मशीन इज एक्चुअली लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक एंड विल कम अप विद द सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन है. तो ये चीजें अचीव हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड ह्यूमन फीडबैक, RLHF हम बोलते हैं, उससे हम AGI को अचीव करें. देन रोबोटिक्स में काफी चीजें हो रही हैं, हेल्थ केयर रोबोट्स जो गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे.
and IoT also devices are coming up with intelligence AI softwares, right? तो अभी हम क्या करेंगे, एक डेमो देखेंगे जिसमें चैटबॉट हम देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक encyclopedia दिखा दूं। दिस इज गेल एनसाइक्लोपीडिया। तो दिस इज गेल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन। सो व्हाट इट इज, इट हैज ऑल दी, अब अगर देखोगे कि इसमें आपको दिखाया जाएगा कि क्या डिजीजेस हैं, जैसे कैफीन इसमें लिखा हुआ, ये एलर्जी, साइड इफेक्ट्स, इंटरेक्शन, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये अराउंड 759 पेजेस है, जिसमें अलग टाइप की डिजीज, जिसमें सारी डिजीजेस हैं, डायग्नोसिस है, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, एंटीबायोटिक कौन सी यूज करनी है, ट्रीटमेंट्स, ये सब चीजें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, रन टाइम में एक बॉट को ये पूरा डॉक्यूमेंट देंगे रन टाइम में, और विद इन अ मिनट उसके पास वो विजडम होगी टू गेट दी आंसर। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल एक चीज हम करते हैं, हम एक चीज पढ़ते हैं, ये कार्पल टनल सिंड्रोम। जैसे आप इसमें देखोगे, अगर इमेज है इसमें, हाँ जैसे यहाँ पे, सो इट्स टिकलिंग और कुछ यहाँ पे नर्व में होती है हैंड के। तो कार्पल टनल लिगमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर कॉज्ड बाय कंप्रेसिंग एट द रिस्ट ऑफ द मीडियन नर्व। डिस्क्रिप्शन क्या है, कॉज एंड सिम्टम्स क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम उस चैट बॉट को ये पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, उससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। यू कैन कंसीडर कि एक डॉक्टर को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो डॉक्टर क्या आंसर दे रहा है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट चैटबॉट। सो लेट मी सिलेक्ट अ फाइल। मैं ये जो एनसाइक्लोपीडिया जो हमने देखी उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, एंड आई आस्क अ क्वेश्चन। टू सेव टाइम मैंने क्वेश्चन पहले रखा था, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो मैं बोलूंगा एज ए पेशेंट, I am having numbness and tingling in my hand. Please suggest me with problem, diagnosis and cure. एज ए पेशेंट मैं डॉक्टर के पास गया हूँ और मैंने पूछा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कुछ डिजीज का नाम नहीं लिया, मैंने ये पूछा कि मुझे नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है इन हैंड, आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डायग्नोसिस है और क्योर क्या होगा। ये तीन चीजें हम पूछते हैं डॉक्टर को। तो जब तक ये रन हो रहा है, ये रन टाइम में क्या कर रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप देखोगे, ये रन टाइम में क्या कर रहा है, इस पूरे डॉक्यूमेंट को चंक्स में स्प्लिट कर रहा है। मैं आपको एक आर्किटेक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये एलएलएम आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें रन टाइम में हो रही हैं, जहां पे वो पूरे चंक्स जो हैं उसको चंक्स में उसने कर दिया, स्प्लिट कर दिया चंक्स में कॉन्टेक्चुअल डेटा को। और वो चंक्स के बाद वो हर एक वर्ड को रीड कर रहा है, उसको वेक्टर्स बना रहा है। जैसे हम बोलते हैं वेक्टर्स, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड विद ए डायरेक्शन, कि एक कोई वैल्यू और उसकी डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। तो वो हम लोग अभी तक 2 डायमेंशन और ज्यादा 3 डायमेंशन तक देख सकते हैं। वो वेक्टर 1536 डायमेंशंस पे एक स्पेसिफिक वर्ड को एनालाइज करता है, जो कि ह्यूमन नहीं सोच सकता। और वो एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है हर एक वर्ड का, और एक वेक्टर डेटाबेस बनाता है जिसके अंदर वो स्टोर करता है। एम्बेडिंग्स बोलते हैं जिसे हम, वेक्टर स्टोर। अब ये एल्गोरिथम पहले वो हर एक वर्ड का वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएगा और वो स्टोर करेगा, एंड उसके बाद जब उसको क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को उस वेक्टर स्पेस, एक तरह से वो मेमोरी उसके पास आ गई, नॉलेज आ गई, उसमें से रेलेवेंट आंसर निकालेगा और वो यूजर को यूजर के हिसाब से, जैसे हम इंग्लिश समझ सकते हैं, लैंग्वेज समझ सकते हैं, उसके हिसाब से कन्वर्ट करके दे देगा। तो लेट्स सी अगर आया है रिस्पॉन्स। हाँ, तो रिस्पॉन्स आ गया। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आई एम हैविंग नमनेस एंड टिगलिंग इन माय हैंड, प्लीज सजेस्ट मी विद प्रॉब्लम, डायग्नोसिस एंड क्योर। तो ये बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, इट साउंड्स लाइक यू मे एक्सपीरियंस सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद कार्पल टनल सिंड्रोम। तो इसने एज ए डॉक्टर इसने बता दिया कि यार ये कार्पल टनल सिंड्रोम है, एंड which is caused by compression of the median nerve within the carpal tunnel at the wrist. इसने डायग्नोसिस भी करेक्ट करा है कि
किस वजह से होता है? डायग्नोसिस क्या है? टू डायग्नोस कार्पल टनल सिंड्रोम, अ फिजिशियन वो टिपिकली स्टार्ट विद ए फिजिकल एग्जामिनेशन. तो ये डायग्नोसिस कर रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है. अब आप ट्रीटमेंट देखो, रेस्टिंग दी effective hand and wrist, avoiding activities that may exaggerate symptoms, wearing wrist splint, बता रहा है कि क्या करना चाहिए और कहाँ से ये पिक कर रहा है वो भी बता रहा है रेलिवेंट सोर्स डॉक्यूमेंट. सो आप देख सकते हैं कि एज ए डॉक्टर ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है रिलेटेड टू द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग. सो नाउ इन द इंडस्ट्री इफ यू हैव क्रिएटेड अ चैटबॉट दैट कैन डू ऑटोमेट दिस प्रोसेस वेयर आप कुछ भी उससे पूछ सकते हो इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के उसमें, और उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी 24/7. लाइक कॉल सेंटर्स में there are people who are actually there to give the technical support to the people, जो लोग वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. अब उसके लिए आपने पूरी टीम बिठाई हुई है एंड 24/7 की शिफ्ट है. तो उसमें आप ट्रेन कर रहे हो बंद को, और हमेशा कोई नई नॉलेज आ रही है तो वो ट्रेन हो रहे हैं, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पीपल हु आर यूजिंग इट, और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है. तो आप कैसे फिगर आउट करो? यू कैन क्रिएट अ चैट बॉट जो एक्चुअली आप क्वेश्चन पूछोगे 24/7 अवेलेबल है और आपको वो आंसर दे देगा. तो आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और कितना एक्यूरेटली आंसर दे रहा है. एज ए डॉक्टर कितनी एक्यूरेटली इसने पूरी आपको ईएमजी, नर्व कंडीशन, सब चीजें आपको बताई. तो इट्स ए प्रीटी गुड आंसर जो आपको मिला, और आपने उस पे क्योर और सब चीजों पे काम किया, और यू गेट गेट वेल, आपने उस चीज को रिजॉल्व हो गया वो. तो now you can see the power of AI, that is the advancements that are happening up, and with that um, I'm open for the Q&A, and we're happy to answer you all the questions. I hope you have liked the session. Okay, thank you so much, Vikas sir. It was a great session, and we have learned a lot. Okay, so guys, if you have any questions, there is chat box over there, and we can allow one by one to ask the questions. Because if I will going to allow you the access to speak, I think everyone, because the strength is more than 300 people, so everyone will going to speak at the same point of time, and we don't have that much of time. Or you can do one thing, guys. Who is the coordinator over there? Aditi ma'am is there. I think you have any questions, you can pen down those questions, and you can just share those questions to Aditi ma'am, and I will ask Vikas sir to respond on those questions. Right, sir? Sure, that will work. This is what we can do. Yes, Deepak is some. I think Deepak, someone from Deepak. They're the. Just a second. Let me give you the access. Okay, Deepak, you can unmute yourself and you can ask the question. Hello, am I audible? Yes, Deepak, you are. Good morning, sir. Vikas sir. Himani? First here. First of all, I am very glad that we are getting a chance to interact with you, so we can get a boost on our career. So, sir, I have a 3 year of experience in industry, 2 year of the front end, and 6 and 1 year of the back end as well. Now I am thinking about the shifting technology like data science or blockchain. So I'm little bit confused between the blockchain and data science. So what should I prefer? Okay. So first of all, I would say, see, every technology has if you talk about to learn new technology, definitely you will help you out. It will help you out in future. So you have to actually find out your interest area, because if you have a strong interest area, you don't learn a technology just because it is hot in the market or it is new in the market. If you want to excel in that specific technology, you should have a strong interest area.
you can ask yourself, okay, whether I like AI more or as compared to the blockchain. Blockchain has also a lot of potential, and uh, Ethereum and a lot of things are coming up in blockchain. And I mentioned like Rust language. So Rust language is pretty getting famous in terms of implementing solutions that uh, as are being used in the blockchain. So blockchain is also a promising career, but it is you who can decide, okay, what is my strong interest area. If you can, if you have more strong interest area in AI, I would suggest you to get into the AI part. And if you are have strong knowledge to know about Solidify, so what is Solaz, Ethereum, and how the blockchain world works, then you can move into that. Even I actually kind of explore like Web3 technology is there. That was uh, 1 year back it was pretty hot, and now also there are very few people who are actually working in it. And it's like in future it will be more often where all the documents will be more required, more secured, so you have to use the blockchain for it. So it depends on you. Both the options are pretty good, but it depends on you what is more interest. If you talk about more interesting for you to get into that specific field and excel. Okay, sir. And I do want opinion, sir, if you don't mind. Yeah, yeah. Sir, what is your opinion about the Q star? Can you please, your voice is not that audible. What you are Hello, saying? Can you, yeah, hello, can you repeat? Can you repeat what sir. you are saying? What is your opinion about the Q star? Q So star. Q star, like as I mentioned about, it's been pretty new where we are talking about AGI, artificial general intelligence, and certain news was there that Q star, uh, uh, that because of Q star, AGI can be dangerous, and so it is pretty new right now, and a lot of speculations are been coming up. And so in AI, what happens? You have to be very closely monitor the things. Not all the things can be correct, or there can be certain hallucination, or there can be certain things that are misled to a certain information. So you have to wait for something like Q star as a concrete thing to come up where a lot of other people are talking about it. And uh, definitely will come with the AGI part, but it is pretty new to actually conclude on something that now you have heard about Gemini. Gemini, Google has actually said that okay, Gemini 1.0 has surpassed the Chat GPT 4 and will try to improve. So there are certain parameters that MMLU scores are there. On that, it is being tracked. What performance it is giving. So that was misled because there were few people who have explored it. So it is not that close to the GPT-4 performance. So in that way, the things that are coming up right now, like in QStar, as I mentioned, it's pretty new, and I would say to wait for some time where a concrete response has been given for it in terms of AGI, if we talk about. Okay, sir. And sir, I want a flavor from you. I also follow in LinkedIn as well as Instagram. And sir, I have a startup, member of 5 people. The startup name was the DAG, Drone Artificial Garbage Detection. And we are work on the TensorFlow. Open using the OpenAI and TensorFlow, we detect the garbage and classify the garbage into the plastic wood and what is the weightage of the garbage using the drone. And so my a part of in started with I'm programming in Raspberry Pi. I'm preparing a Okay. model, and some of those people are working on the hardware. So I want a flavor on that. So I also follow LinkedIn and Instagram. If I can say, so if you have looked into where you can Okay, respond. we can connect. We can connect offline. You can buzz me on LinkedIn, and we can connect definitely. We can. Okay.
Please proceed. That's so great. Thank you so much. Thank you so much, Harsh, for this question. If you have any queries, you can take the number from your TPOs, and you can just connect with us. Okay. And one more thing, Weber, before I should give you a chance, I just want to tell you one more thing, guys. आपको एक लिंक फॉर्म भेजा गया हुआ है रवि सर के पास. आप उस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस भी आप मेंशन कर सकते हो. उस फॉर्म को आप फिल करिए, जिसके भी सारे फॉर्म्स को एंटरटेन किया जाएगा और जिसके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको रिप्लाई किया जाएगा. So we will be having you can directly reach us on that part also. And the most important thing is like those who have attended this session, जिन लोगों ने ये session attend किया हुआ है. Weber, please, can you Weber, can you unmute yourself? Can you mute yourself? Good afternoon. Yes. Good afternoon, sir. Weber, just a Sir, second, Weber. Sir, Let me finish. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. एक सेकंड वेबर, मैं अपना फिनिश कर लेता हूँ, फिर आप पूछेगा. ठीक है? ओके सर. ठीक है गाइस, उस फॉर्म को फिल इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने जिसने ये अटेंड किया है सेमिनार, यू गाइस विल बी गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन. ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा डेल्टन की तरफ से कि आपने एआई का एक सेमिनार, आपने वेबिनार अटेंड किया है. सो दैट विल बी हेल्प इन योर करियर ऑल्सो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब. So please fill that form, and if you need any help, you can just directly coordinate with your TPO, Mr. Ravi, right? Mr. Ravi. Yes, Weber. This will be a last question, Weber. I'm so sorry. आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप अपना क्वेश्चन जल्दी पूछ लीजिए. थैंक यू सर. सर एक्चुअली मैं फ्रेशर हूँ सर अभी. सर मुझे एक मशीन लर्निंग में लर्न कर रहा हूँ, तो सर मुझे जानना था सर कि किस तरह से मैं स्टार्टिंग करूँ. मतलब सर क्या मेरा बेसिक जो होने चाहिए टेक्नोलॉजीज में पढ़ूँ सर. जैसे एल्गोरिदम्स तो होते ही हैं सर, फिर भी सर मैं अप्लाई कर रहा हूँ. मैं लगभग 9 मंथ्स हो चुका है पढ़ते हुए सर. फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ सर. प्रोजेक्ट मैंने लगभग जो बेसिक प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं सर, तो मैं जानना चाहूँ सर किस तरह के प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे सर. सो देखिए, आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं टू गेट दी जॉब, तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि फंडामेंटल्स क्लियर कर लो कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कितना आप कंफर्टेबल हो. एंड उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पाइथन आप यूज कर रहे हो तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर के आप क्वेश्चंस करिए. देन अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट आप रियल टाइम प्रोजेक्ट लीजिए, जो कि आपको लगता है कि ये मेरी वैल्यू एडिशन करेंगे. तो वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं जो डेटा सेट, जैसे आप कैगल जा सकते हैं. कैगल करके एक साइट है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो डेटा सेट्स को, रियल टाइम डेटा सेट्स को, और आप वहाँ से आप प्रोजेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so guys, I'm getting a question that you need a link also that to fill that form. So I'm just sharing that link to you guys on the chat box. You can just download over there and you can just directly fill that. Okay. And thank you so much, Vikas sir, for this seminar, and I really appreciate your time and effort. So if there will be any further questions, I will definitely get back to you on this. Sure. Thanks a lot. And I would say that keep learning new things, and definitely AI is a great field to start your career. And good luck for guys for all the learning, and good luck for your future. Thanks a lot to be as part of this session.